Welcome back, students. Myself, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम लोग कर रहे हैं रीजनरेशन का टॉपिक और इसी में हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था रीजनरेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर रीजनरेशन के बारे में बता दिया था। आज हम शुरू करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स के बचे हुए फाइलम के अंदर रीजनरेशन। उसमें सबसे पहले एनालिड्स की हम बात करते हैं कि एनालिडा के अंदर किस तरीके से रीजनरेशन होता है। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट ऑन द रीजनरेशन पावर ऑफ एनालिड्स, बोथ पॉलीकिड्स and oligokids. They regenerates anterior and posterior ends after amputation. यानी कि एनालिडा के पॉलीकीटा में और ओलिगोकीटा में दोनों के अंदर ही रीजनरेशन होता है और ये अपने अगले और पिछले दोनों पार्ट्स को रीजनरेशन के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। इफ़ एनी ओलिगोकीट इज कट इनटू टू हाफ्स, द पोस्टीरियर हाफ रीजनरेट द एंटीरियर एंड with the mouth, and the anterior half it will regenerate the new posterior end. In this way, the two new individuals may thus be produced from the original one. यानी कि इसके अंदर यदि कोई भी एनालिडा है, सपोज ये एनालिडा है, इसको काटा जाता है तो काटने के बाद जो है वो दो एंड बन जाएंगे इस तरीके से, और ये दो एंड्स जो होते हैं वो आगे जा कर के दो नए इंडिविजुअल जो हैं उनको फॉर्म करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है, दो एनालिड्स नए बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैरिल्स 1952, majority of annelids in majority of annelids regeneration is somewhat restricted. At the anterior cut surface, a limited number of segments they are formed, the number being typically for every species. यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर रीजनरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होगा। इन अर्थफॉर्म एलोलोबोर्फा फोइटिडा दिस नंबर इज़ 4 or 5. If 5 segments or less are cut off from the anterior end of the worm, the regeneration it is complete. यानी कि उसके आगे वाले पार्ट में से 5 सेगमेंट तक कट लग जाए या उससे कम कट लगे तो बनने वाला तो रीजनरेशन जो है पूरा होगा, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरे के पूरे वॉर्म को रीजनरेट कर लेगा। यदि 5 सेगमेंट से ज़्यादा मोर देन 5 सेगमेंट के ऊपर कट लगाया जाए, यानी कि छठे सातवें आठवें सेगमेंट पे कट लगाया जाए तो ओनली 4 और 5 सेगमेंट्स विल बी रीजनरेट एंड द वॉर्म will not thus attain the same overall number of segments as it had before the operation. यानी केवल शुरू के जो 4 या 5 सेगमेंट हैं वही बनेंगे, बचे हुए सेगमेंट्स नहीं बनेंगे। For example, if the cut is carried out behind the genital segments, that is 10th or 14th, only 4 or 5 anterior segments they are regenerated and the genital organs are thus never renewed. यानी कि इसमें फिर genital organs जो हैं वो नहीं बनेंगे। On the other hand, there is no restriction in the regeneration of posterior segments and the same numbers are formed as have been removed. यानी कि पीछे वाला भाग जो होता है उसका एनालिड्स का, उसके अंदर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसमें कितने भी सेगमेंट्स हम हटाएंगे वो पूरे के पूरे जो है रिन्यू हो जाएंगे। केवल आगे के सेगमेंट्स में ही भी इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन होता है कि जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो कभी भी रिन्यूड नहीं होते हैं। इन दिस वे प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इट इज़ एपीमॉर्फोसिस, दैट इज़ a regeneration bud it is formed and new parts develop at the expense of this bud. Weiss in 1939 pointed out that Hirudinea does not regenerate at all. यानी कि हिरुडीनिया जो है एनालिड्स के अंदर उसमें किसी भी तरीके का रीजनरेशन नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज़ मोलस्का। Among mollusks, the snail and the slug offer interesting examples of regeneration. If the snail's head, or at least the greater part of its head, it is cut off, the missing elements will regrow. The face, the mouth, the radula,
or rasping tongues, the two pairs of tentacles, one of which carries the eyes. In view of the structural complexity of these organs, the snail's regeneration is particularly striking. A similar phenomena also occurs among slugs, but their regeneration it is less perfect. snails के अंदर बिल्कुल perfect होता है, जबकि slugs के अंदर ये थोड़ा सा कम perfect होता है. It was in the 18th century, towards 1768, that the regrowth of the snail's head was first observed by Abbe Splanzani. It was one of his first discoveries and caused a sensation. At that time, the phenomenon of generation was known only in Hydra, an animal of much lower category. The snail was several stages higher in the animal kingdom, and at first many naturalists denied the reality of Splanzani's discovery. Cutting of snails had become the rage, and two camps were formed, pro and anti स्प्लॉन्जनी. यानी कि कुछ लोग जो हैं वो स्प्लॉन्जनी जो है उसके पक्ष में आ गए और कुछ जो है उसके एंटी थे. अमोंग द स्नेल बी हेडर्स were men of no less distinction than the great chemist Lavoisier and Voltaire himself, who related his personal experiments in two small pamphlets entitled The Singularities of Nature and The Snails of Reverend Father S.K. Boitier. The regeneration of snails had delighted Voltaire, who held that natural history had never produced anything more astonishing, marvelous, and wonderful. The miracle he insisted was worthy of Saint Denis, who, when decapitated, walked 6 miles with his head in his hand. That a head should be restored of to an animal so large and visibly alive, an animal whose genus is unequivocal, is an unheard of but a prodigy which cannot be denied. In this case, no suppositions have to be resorted to, no microscopes employed, no errors of calculation feared. Human reasons and above all scholastic philosophy is confounded by the testimony of our eyes. We considered the head in the living being as the guiding principle and cause of movement, sensation, and perception. Here it is just the opposite. In the course of a fortnight or 3 weeks, the head which is reborn receives from the body fibers, nerves, and circulating liquid which serves for blood, telescopic tentacles, eyes, a brain, sensation, and ideas. The regeneration of snail head was carefully studied by biologists. It was a first believed that the head to grow against the decapitation had to be made in a way which spared the cerebral ganglions, which in fact constitute the animal's brain. According to according the regrowth of head does not depend directly on the presence of nerve centers but on the integrity of certain tissue zones which alone have the power to regenerate the head. तो इस तरीके से मॉलस्क के अंदर हेड के रीजनरेशन जो है उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, और ये लास्ट में ये हुआ कि जो हेड का जो रीजनरेशन होता है वो कोई नर्व सेंटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि में ये जो है वो सर्टेन टिश्यू जोन्स होते हैं जो कि हेड को रीजनरेट करने की पावर रखते हैं. आर्थ्रोपोडा फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स such as insects, crustaceans, centipedes, spiders, and scorpions, the facility of regeneration it is much reduced. Although as long as the animal's growth is incomplete, it can regenerate feet and antenna. The phenomena of autotomy is frequently observed in crustaceans. For instance, when the leg of a crab is wounded, it will fall off, and the spontaneous amputation of leg always occurs at the same level.
namely at a joint at the base of the leg, which seems prepared in advance for the purpose. The walking legs of crayfish and spiny lobster break off less easily than those of crabs, except for the first pair, which are provided with large claws and also have a joint ready for autotomy. When a leg it is detached by autotomy, very little blood is shed. Autotomy is controlled by a nervous mechanism. It is a reflex action in which the brain plays no part. If, however, the ventral nervous chain destroyed the phenomena, it will not occur. Free living spiny lobster, it often lost their claws. Rathbun reported that among hundreds of spiny lobsters freshly caught in Narragansett Bay in 1880, a quarter had lost at least one of their two claws, while according to the Harris statistics quoted by Morgan, 7% of 725 spiny lobster captured at Woods Hole had lost one or two claws. The origin of phenomena of autotomy it has been much debated. To some extent, it may be considered a means of defense for the animal. If, for instance, a crab is seized by a leg, it can escape by sacrificing the leg. A sacrifice which, if the animal is young, is not too painful, since young crabs have the power to grow the new leg. यानी कि जो छोटे क्रैब्स होते हैं उनके अंदर नई लेग जो है उसको बनाने की पावर होती है. Some authorities seen in autotomy an arrangement to facilitate regeneration, and there are in fact cases, notably that of the crab, in which regeneration takes place more successfully in a zone of autotomy than in other regions of the animal's body. The problem is particularly difficult because it raises the large problem of natural selection. One can only say that it is far from certain that the advantages bestowed by autotomy are of a kind which favor the survival of animals in competitive existence. The crab Alpheus, it has claws of unequal size. One it is very large and one is small. The large claw can be either the right claw or the left. If it is amputated, a small claw will grow to replace it, while at the same time the small claw opposite will begin to grow until it becomes the size of originally amputated large claw. At the end of the process, there will be, in other words, be an inversion of the normal asymmetry of the crab's claw. It is as though the large claw had, until amputated, exercised a restraining or inhibitory influences over the growth of a small claw. The process would seems to be controlled by a nervous rather than a humoral mechanism. इनके अंदर nervous mechanism जो है वो इसको control करती है क्रैब के अंदर. In another crustacean which also have claws of unequal size, regeneration does not result in a reversal of asymmetry. In these cases, the physiological equilibrium between the two claws is, at least if the animal is an adult, definitely fixed. यानी कि यहाँ पर जो हमने क्रैब की बात की उसके अंदर किस तरीके से रीजनरेशन होता है. यदि क्रैब के हमने लेफ्ट पर से छोटी वाली उसके क्लॉ जो है उसको काट दिया है तो दूसरी तरफ जो है वो लंबा, इस जगह पर लंबा वाला बन जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो छोटी तरह हो जाएगा. तो एसिमेट्रिकल होता है, जबकि दूसरे क्रस्टेशियन के अंदर यह सिमेट्रिकल होता है. Echinodermata, the arms of starfish will grow again when cut off. In this animal, a singular phenomenon known as autotomy is observed. If an arm is wounded or merely brutally handled, it will be its own accord becomes detached at the base in a kind of spontaneous self amputation. यानी कि इसकी आर्म के साथ यदि किसी तरीके का उसको छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि उसको यदि वो किया जाता है तो यानी उसे काटा जाता है या उसको गलत तरीके से हैंडल किया जाता है तो स्टारफिश अपनी आर्म को वहीं छोड़ देती है.
In the case of other echinodermids, the Ophiuroidea, it is enough to seize the animal by an arm for the arm to fall off. The phenomena of autotomy, it is a particularly striking in Holothroidea or sea cucumber. When this animal is handled or merely disturbed, it will eject all its internal organs, including its digestive tube. This spontaneous self abscessation will then be followed by complete regeneration. इसमें क्या होता है, होलोथ्यूरोइडिया के अंदर, सी कुकुम्बर के अंदर, यदि इसको हम मिस हैंडल करते हैं एनिमल को या डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अपने सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, ये इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव ट्यूब, उसको बाहर की तरफ इजेक्ट कर देता है और उसके बाद ये कंप्लीट रीजनरेशन इसके अंदर होता है. तो ये था इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रीजनरेशन. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे